हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पुराने बड़े टायरों की रीट्रेडिंग या बहाली एक तकनीकी प्रक्रिया है जिससे पुराने घिसे हुए टायरों के ऊपर नई रबर की परत चढ़ाकर उन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाया जाता है। यह प्रक्रिया जेसीबी जैसे भारी वाहनों के टायरों के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि ये टायर महंगे होते हैं और रीट्रेडिंग से लागत में बचत होती है। इस वीडियो में आप जेसीबी या अन्य भारी वाहनों के पुराने टायरों की रीट्रेडिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टायर को पूरी तरह से चेक किया जाता है। उसकी केसिंग यानी कि टायर की बनावट अंदर से सही है या नहीं। टायर फटने, अधिक कटने, सील वायर निकलने, किसी भी तरह की गंभीर क्षति होने पर उसे रीट्रेडिंग योग्य नहीं माना जाता। टायर की पुरानी रबर की परत को विशेष मशीन से हटाया जाता है ताकि नई रबर की परत को अच्छे से चिपकाया जा सके। प्रक्रिया में टायर की सतह को खुरदुरा बनाया जाता है इससे नया ट्रीड मजबूती से जुड़ सके। अगर टायर में छोटे मोटे छेद या कट हो तो उन्हें भरने के लिए टेप या फिलर का इस्तेमाल किया जाता है। नई ट्रीड रबर की परत को टायर पर चिपकाना, इसके दो तरीके होते हैं। प्री-क्योरेड पहले से बनी हुई ट्रीड को टायर पर लगाया जाता है और दूसरा मोल्ड क्योरेड कच्ची रबर लगाकर मोल्ड पर दबाकर नई ट्रीड बनाई जाती है। टायर को एक ऑटोक्लेव या वल्केनाइजेशन मशीन में गर्म और दबाव के साथ पकाया जाता है। नई रबर टायर के साथ मजबूती से जुड़ जाती है और टायर की मजबूती वापस आ जाती है। टायर को पूरी तरह से चेक किया जाता है कि कहीं हवा लीकेज तो नहीं, ट्रीड ठीक से जुड़ी है या नहीं। बैलेंसिंग भी चेक की जाती है। रीट्रेडिंग से टायर की उम्र बढ़ती है। पर्यावरण के लिए फायदेमंद क्योंकि पुराने टायर फिर से उपयोग में आ जाते हैं। हमेशा ISI या VIS नियता प्राप्त रीट्रेडिंग यूनिट से ही काम कराएं। टायर की केसिंग अच्छी होनी चाहिए। भारी मशीनों में रीट्रेड टायर का उपयोग सावधानी से करें, खासकर खदानों या उबड़-खाबड़ रास्तों पर।